Good evening, friends. Welcome to your favorite YouTube channel, Unacademy GATE MEXCPI. This is your educator Aprup Rao, and you are watching the lecture series of Strength of Materials in the booster batch for GATE 2021, 100 days full free crash course. And today we are going to see the concept of bending stresses in beams. Today we are going to see the concept of bending stresses in beams. So call everyone, tell every one of your friends that we are live. Call them online, call them online. I want at least 100 people live every day. That was my condition, right? मेरी कंडीशन सबको क्लियर थी. मैंने हमेशा यही बोला है, मुझे कम से कम 100 बच्चे चाहिए लाइव, तभी आपको कंप्लीट फुल एनर्जी देखने को मिलेगी. सो इफ यू वांट माय फुल एनर्जी, देन प्लीज शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स. Tell them to be live, tell them to be online, and today we are going to see how to calculate the bending stresses in beams. I am going to explain every concept behind the equation of bending stress. We are going to see some really amazing unique concepts. Good evening, good evening, good evening Utkarsh, good evening Praveen, good evening Suraj, Srinivas, Deepak, Rishi, Prasad, good evening, good evening, good evening. Like the session, hit the like button right now and share the link with your friends. Share the link with all your friends, share the link with your WhatsApp groups, your Telegram groups, share the link with your friends, share the link with your college groups, share the link with everyone. Please hit the like button and share the link. Please hit the like button and share the links. Yes, yes, yes. Now, those of you who are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aprup Rao, All India rank 320. I have done my MTech from IIT Kharagpur. My specialization was mechanical systems design. I worked at Mahindra Research Valley, which is the R&D of Mahindra and Mahindra Automobile and Tractor Division. The cars of Mahindra, the tractors of Mahindra are designed at MRV. I was a deputy manager there for 2 years, but then I quit my job and I started teaching. I've been teaching for more than 6 years now, and I teach subjects related to design: SOM, MD, EM, and TOM. And I am here because of my love and passion for teaching. And if you are following me from the beginning, then I can guarantee you that you will also fall in love with these subjects. You will fall in love with the subjects of design. Your concepts related to these subjects will be crystal clear. So beta, we have started the chapter of beam. So beam se related one topic we have already completed, and that was shear force and bending moment diagrams. We now know how to calculate the shear force and bending moment and how to draw the shear force and bending moment diagrams, right? Now, once you calculate the shear force and bending moment, the next step is to calculate the stress and the deformation, right? Shear force and bending moment are nothing but the internal force and moment. Once you get the internal force and moment, what do? You calculate the stress, you calculate the deformation. So beta, first we will calculate the stresses developed in the beam. So beta, there are two types of stresses developed in the cross section, and that are bending stress due to bending moment and shear stress due to shear force, right? दो टाइप के stresses cross section में develop होंगे. एक तो bending moment की वजह से bending stress आएगा और दूसरा shear force की वजह से shear stress आएगा. So we will see how to calculate both these stresses separately. We will not consider them together. We will deal with them separately. So first we will deal with the bending stresses in beams. We will understand how to calculate the bending stresses, and then we will see how to calculate the shear stresses in beams, right? Now, as mechanical engineers, the more important topic to us is calculation of bending stress. Compared to calculation of shear stress, for us, the calculation of bending stress is more important because mechanical members usually fail due to bending. Mechanical members जो है वो bending stress की वजह से fail होता है. Structural members might fail due to shear, but mechanical members, metallic members usually fail due to bending stress. So beta, this is more important to us. So in this chapter, I am going to explain how to calculate the bending stresses in beams, and we are going to see some really interesting concepts related to bending stresses. Okay. Now, in order to first understand
the equation of bending stress, we need to see some basic concepts. Bending stress की equation discuss करने से पहले हमें कुछ basic concept discuss करने होंगे, क्योंकि ये basic concepts पढ़े बिना मैं सीधे अगर bending stress की equation बताऊंगा, you will not understand anything. Okay, and these concepts are important from exam point of view, because you will get those 1 mark theory questions from these concepts. So these are really very important concepts. Okay, so let's see one by one what are these interesting concepts. So the first concept that you need to understand, which is very important, is pure bending. What is pure bending? Understand, pure bending is when the beam is subjected to constant bending moment. Pure bending किस चीज को बोलता है? अगर किसी बीम में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट यानी वन एंड से सेकंड एंड तक पूरे बीम में अगर बेंडिंग मोमेंट सेम है, कांस्टेंट है, देन दैट इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग. सो व्हेन डू वी गेट प्योर बेंडिंग? प्योर बेंडिंग occurs when the shear force in the beam is zero. Now let's understand how this condition arises. Okay, so let's say this is our beam, and let's say I am applying a bending moment. I am applying a couple M here and a couple M here. Okay, now if you draw the shear force diagram here, अगर आप shear force diagram draw करोगे, then beta from one section to another section, from this section to this section, at every point the shear force is going to be zero, right? The shear force is going to be zero because there is no force, there is only moment here. So from this end to this end the shear force is zero. Now what is the equation, what is the relation between shear force and bending moment? I can write dm by dx equals to s, right? Dm by dx equals to s, where dm by dx is the slope of bending moment diagram, s is the shear force. Now in our case the shear force is zero. So if the shear force is zero, the slope of bending moment diagram is also going to be zero. अगर shear force zero है तो bending moment का slope भी zero है, और bending moment का slope zero होने का मतलब क्या है? Slope is zero means we are getting a horizontal line, right? Slope is what? It is the angle from horizontal. Slope is what? It is the angle from horizontal. So if slope is zero, then it is a horizontal line. So you are going to get a bending moment diagram like this. At every point the bending moment is going to be same, constant. अगर आप कोई भी section ले, consider this section, this section, this section, this section, from left or from right, the bending moment is going to be same, m. So this situation is known as pure bending. Now beta, practically in every case you will never get pure bending. किसी भी केस में practically आपको pure bending नहीं मिलती है. At least throughout the beam you are never going to get pure bending. Maybe in some region of the beam, maybe किसी particular region में आपको pure bending मिल सकता है, but throughout the length of the beam you will never going to get pure bending, right? Because there will always be a force, and if there is a force then there will be shear force, and if there is shear force then bending moment is not going to be constant, right? So beta, if practically we are not going to get this condition, then why we are discussing it? अगर practically हमको ये condition नहीं मिलने वाली है तो इसको हम discuss क्यों कर रहे हैं? Why we are studying pure bending? Because pure bending is an ideal condition. It is an assumption which if we don't make, then it will be very difficult to find the bending stress in beam. बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए प्योर बेंडिंग अज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द इक्वेशन विच वी यूज टू कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? व्हाई दिस अजम्पशन इज सो इंपॉर्टेंट टू अस? क्या ये क्लियर है कि ये अजम्पशन हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है? बिकॉज बिना इस अजम्पशन के हम बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते. आई विल एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस अजम्पशन. ओके, व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द थ्योरी बिहाइंड बेंडिंग स्ट्रेस, आई विल एक्सप्लेन व्हाई प्योर बेंडिंग इज सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो बेटा, प्योर बेंडिंग
is an ideal condition. It is an ideal condition. Practically, you will never get pure bending throughout the beam. पूरे बीम में प्योर बेंडिंग प्रैक्टिकली नहीं मिलती है, लेकिन हम इसे अज्यूम करते हैं ताकि हम बेंडिंग की इक्वेशन डिराइव कर सके. Is it clear to everyone? Yes, yes, yes. Very good, beta. Hit the like button and share the link. Right now, there are not 100 people live, so please hit the like button, share the link, and call every one of your friend. I want at least 100 people live every day, and then only you will see how energetic I will be, how energetic these lectures will be. ठीक है? चलो. Now, beta, the theory that we use to calculate bending stress is known as Euler-Bernoulli's beam theory. जो beam बेंडिंग की स्ट्रेस इक्वेशन जो होती है, बेंडिंग से कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन होती है, that is calculated based on Euler-Bernoulli's beam theory. Now, what is Euler-Bernoulli's beam theory? Now we will understand. So there are certain assumptions in this theory. Let's understand those assumptions, because without these assumptions you will not be able to understand how we derive the equation of bending. तो बेटा बेंडिंग की इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, क्या थ्योरी है उसके पीछे, ये समझने के लिए ये असम्पशन समझना बहुत जरूरी है. एंड दीज असम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because you will see a lot of theory questions based on these assumptions. What are the assumptions of Euler-Bernoulli's beam theory? What are the assumptions of pure bending theory? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एग्जाम में, not only in GATE, ESE, PSU exams. You will see these questions based on the assumptions of Euler-Bernoulli's beam theory. So let's understand one by one what are the assumptions behind Euler-Bernoulli beam theory. So the first assumption, which is common in every chapter, is material of the beam is homogeneous and isotropic. जो मटीरियल है बीम का वो होमोजीनियस भी है और आइसोट्रोपिक भी है. We have understood this homogeneous and isotropic already. Young's modulus in tension and compression is same. Now this is another important assumption, because there are certain materials for which Young's modulus in tension is different and in compression is different. Now why we are discussing this, why we are taking this into consideration, because when the beam bends, जब beam bend होता है, then some of the layers are subjected to tension and some of the layers are subjected to compression, right? So there is tension as well as compression in a beam. So it is important to assume this, that the Young's modulus in tension and compression are same. Then the next point is stresses are within proportional limit. Now this is another very important assumption, and I have already explained to you why this assumption is so important. Why this assumption is important? Because in order to find the equation of stress, first we find the equation of strain. First we see how the strain is distributed over the cross section. पहले हम ये देखते हैं कि strain का distribution कैसा है, क्या strain constant है, linear है, parabolic है. And then we apply Hooke's law to find the stress distribution, whether the stress is constant, linear or parabolic. So when do we get the equation of stress? By applying the Hooke's law, finding the equation of strain and then applying the Hooke's law. तो बेटा कोई भी स्ट्रेस जो है वो उसी तरीके से निकलता है. जब तक आपको ये नहीं पता कि डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन कैसे वैरी कर रहा है, आप नहीं निकाल सकते कि स्ट्रेस कैसे वैरी कर रहा है. एक बार स्ट्रेन की इक्वेशन मिल गई, देन वी अप्लाई द हुक्स लॉ, एंड इन ऑर्डर टू अप्लाई द हुक्स लॉ, दिस assumption is really important. Stresses are within proportional limit. Yes? Now, next point. All the transverse sections remain plane after, the next assumption is the beam is under pure bending. अब बेटा ये जो point है, the beam is under pure bending, why it is important? It is related to the next point. Okay, so next point is all the transverse sections remain plane after bending. Now this is the assumption based on which we find the distribution of strain and the distribution of stress. अब इसको मैं अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना चाहता हूं, because the entire Euler-Bernoulli's beam theory is based on this assumption. Euler-Bernoulli beam theory जो है वो इसी assumption पे based है. There is another theory called Timoshenko beam theory that is not in our syllabus. In our syllabus we only have Euler-Bernoulli beam theory. So there is another theory called Timoshenko beam theory. That theory is different. Euler-Bernoulli's beam theory is different. And why they are different? Because of this assumption. ये जो assumption है, all the transverse sections
remain plane after bending. This is a very important assumption because of which we are able to derive the equation of bending stress. Okay, now beta, let's understand this assumption. पहले समझते हैं कि assumption का मतलब क्या है. What is the meaning behind this assumption? Okay, so let's say we have a beam subjected to pure bending. मान लो एक beam है जिसमें pure bending हो रही है. Okay, I am applying a couple here. I am applying a couple here. This is M. So this will also be M. So the beam is going to bend like this. Now consider any one section. कोई भी एक section जो है आप assume कर लो. Let's consider this section. Let's consider this section. Okay. Now beta, let's say this is the top layer, this is the bottom layer, and this is the central layer of the beam. ठीक है, मान लो ये जो है beam की central layer है. I will consider 3 points here, A point, B point and C point. ठीक है. Now look at this. Look at this. Look at this. Okay. Understand how the beam is deformed. Okay. So beta, initially the beam was like this. Initially the beam was like this, right? Now after bending, what is going to happen? After bending, you can see that the top layer is compressed and the bottom layer is expanded, right? आप देख सकते हो कि top layer जो है वो compress हो चुकी है और bottom की layer expand हो चुकी है and the central layer is undeformed. Central layer जो है वो undeformed है, वो पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है. Okay. Now what is our assumption? That the transverse sections remain plane after bending. This is a transverse section and it was before bending. Now after bending, what is going to happen? Understand. After bending, I am assuming that this section will remain plane. So beta, let's say this is point A, this is point B, this is point C. So after bending, what is going to happen? A will go here, A dash, B will remain there, C will go here, C dash. So I am going to get something like this. ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा. Now understand, the transverse section remain plane after bending. So beta, if I am assuming this, then mathematically what does it mean? इसका mathematical meaning क्या होगा? Understand, what is this A to A dash? What is this C to C dash? ये क्या आपको show कर रहा है? What is this showing? This is showing the deformation in the beam, right? ये A से लेके A dash, ये point, ये जो आपको distances मिल रहे हैं, what are these? These are the deformation, right? A इतना deform हुआ, C इतना deform हुआ, B बिल्कुल deform नहीं हुआ. So beta, you can see that if the transverse section remain plane after bending, then the deformation from top to bottom are varying linearly. Deformation जो है वो linearly vary कर रहा है, right? Deformation जो है वो linearly vary कर रहा है ऊपर से नीचे तक. If you see that the transverse section remain plane after bending. अगर मैं इसको अलग से draw करूं तो you will get this. You will get this. This is the deformation. This is the deformation, or you can say this is the strain. This is the variation of strain. Okay. This is the एक सेकेंड उल्टा बना दिया मैंने. अपने assumption के हिसाब से it is happening like this. अपने assumption के हिसाब से it is happening like this. So beta, this is the variation of strain. This is the variation of strain. So beta, according to this assumption, transverse section remain plane after bending. According to this assumption, the strain varies linearly, and if the strain varies linearly, then according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. So the stress will also vary linearly. So beta, here according to this, the variation of stress will also be linear. So what is this? This is the distribution of strain. This is strain variation, and according to Hooke's law, stress will also vary linearly. So this is stress variation. This is stress variation. Is this clear? Is this point clear? Yes, yes, yes. चलो चलो, तो बेटा यहाँ डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि if the transverse section remain plane after bending, then the strain will vary linearly. Now if the transverse section does not remain plane after bending, अगर transverse section plane नहीं होता तो क्या होता बेटा? Understand,
इट वुड हैव बीन डिफॉर्म्ड लाइक दिस, है कि नहीं? अगर ट्रांसवर्स सेक्शन जो है प्लेन नहीं होता, कुछ ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाता, तो बेटा उस केस में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता वो ऐसा लीनियर नहीं मिलता, राइट? तो ट्रांसवर्स सेक्शन प्लेन है, इसका मतलब दिस डायग्राम विल बी लीनियर। और ट्रांसवर्स सेक्शन अगर डिस्टॉर्ट हो जाता है, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, देन यू गेट दिस। नाउ when will I get this type of distortion? Understand बेटा, what did I say? मैंने आपको क्या बताया था कि pure bending is very important assumption. Pure bending is very important assumption. Why pure bending is very important? I will now explain to you. Let's say we have a cantilever beam subjected to a force like this. So beta, in this case you will see that when the beam bends, there is also shear, right? जब beam bend होगी उसमें shear भी होगा, there will also be shear. When the beam will bend like this, when the beam will bend like this, there will also be the effect of shear, because this is not pure bending, right? ये pure bending नहीं है, तो यहाँ पे shear भी होगा, और shear की वजह से क्या होगा? Due to the shear, all these planes will deform over each other. बेटा shear की वजह से क्या होता है? Understand. Shear stress will be developed like this, right? Shear stress will be developed like this, right? Shear stress जो है वो कुछ ऐसा develop होगा, right? This is the shear stress due to the shear force, okay? Bending moment से bending stress, which is a normal stress, and shear force की वजह से shear stress, which is tau, okay? So बेटा due to this shear, what is going to happen? Look at this. ये जो shear हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? The top plane, bottom plane, all these planes are going to be distorted, and the cross section which was plane before bending will not remain plane after bending. तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, it is going to be distorted like this. जो क्रॉस सेक्शन पहले प्लेन था वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ shear. So if you don't want this type of distribution, अगर आप इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते हो, then you need to assume that there is no shear, means there is pure bending. Is this point clear to you? Is this point clear to you? Yes, very good बेटा, very good, बहुत बढ़िया. तो बेटा क्या ये चीज क्लियर है? Why we assume pure bending? Why we assume pure bending? So that we will get this transverse section remain plane after bending. Otherwise, if you are not assuming pure bending, if there is shear with pure bending, अगर bending के साथ shear भी है, then the transverse section will not remain plane, it will be distorted, and when it will be distorted, then you will not get a linear variation of strain, linear variation of stress. Yes, very good, बहुत बढ़िया बेटा. Hit the like button and share the link. Please share the link. I need 100 people. Okay, so बेटा ये चीज क्लियर है. Okay, now these assumptions are very important. ठीक है, ये assumption जो है बहुत important है, because there are a lot of questions based on this assumption. Transverse section remain plane after bending, इसका मतलब क्या है? तो बेटा बहुत बच्चे जो है ये समझ नहीं पाते हैं. A lot of times this is not really well explained in the books. Okay, so this is the explanation behind this point, behind this assumption. Okay, let's move on to the next assumption. Beam is initially straight and bends into a circular arc. अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो जब बीम बेंड हो रही है, हमारा assumption क्या है? जब बीम बेंड हो रही है तो ये जो कर्व बन रहा है, this is what? This is a circular curve. This is a circular arc. Okay, that is our assumption in order to derive the equation of bending. ठीक है, बेंडिंग की इक्वेशन डिराइव करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट assumption है कि जब बीम बेंड होता है तो ये जो कर्व बनता है, this is a circular arc. Practically we do not get a circular arc. Practically what will be the equation of this curve, that I will explain in deflection of beams. ठीक है, deflection of beams में मैं बताऊंगा कि ये कर्व जो है कैसा बनता है और इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं. ओके, सो बेटा दिस इज जस्ट एन assumption that under pure bending the beam bends into circular arc. ये circular arc बन रहा है. ठीक है, next assumption, cross section of the beam is symmetric about the plane of loading. Now this is also very important. Why? Because related to this there is a very important concept, and that is newly added in the syllabus of GATE 2021, which was not there before. ये जो टॉपिक है
जिससे रिलेटेड ये assumption है, वो पहले गेट में नहीं था बट गेट 21 में उसको नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेटा द टॉपिक related to this assumption is shear center. When I will explain the shear stress in beams, I will explain the concept of shear center, but this assumption is really important, okay, if you want to understand it. So cross section of the beam is symmetric about the plane of loading. Okay, now I will explain this using the diagram. तो बेटा ये वाला डायग्राम जो है मैंने बनाया हुआ है in order to explain the concept. Now first of all understand what is plane of bending, okay, sorry, plane of loading. So let's say this is a simply supported beam or a cantilever beam, okay. अब बेटा when I draw a diagram like this, जब मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं, let's say this is a beam, let's say this is a cantilever beam subjected to point loads, ठीक है. तो ये point load जो है लग कहां पे रहा है, where exactly it is acting, because this is the top surface of my beam, so this point load can be acting on the edge, this point load can be acting on the center, this point load can be acting on the other edge. तो ये पूरे surface में exactly लग का रहा है. So these point loads, whatever load acting on the beam, we assume that it is acting on this particular plane known as plane of loading. ये point load यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, इन points पे लग रहा है, ठीक है. Now बेटा understand. This is the plane of loading. ये क्या है? This is the plane of लोडिंग, जिस प्लेन में सारा लोड एक्ट कर रहा है, ओके, जो भी लोड है, पॉइंट लोड, यूडीएल, कपल, व्हाटएवर लोड इट इज, द लोड इज एक्टिंग इन दिस प्लेन. जो लोड लग रहा है वो इस प्लेन में लग रहा है. मतलब मान लो दिस इज योर बीम, इसको अगर मैं सेंटर से कट करूं एक प्लेन से, इफ आई कट दिस बीम फ्रॉम सेंटर यूजिंग अ प्लेन, देन दैट प्लेन इज द प्लेन ऑफ लोडिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस assumption, I am assuming that the beam is symmetric about this plane of loading. यानी ये जो plane of loading है ये कहां आना चाहिए, exactly सेंटर पे आना चाहिए बीम के क्रॉस सेक्शन के. Now this is very important, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, that I will explain when I will explain the concept of shear center, ठीक है. We will relate this concept with shear center, okay. तो अभी मैं समझाऊंगा, you will not understand. Even if I am trying to explain, even if I try to explain it right now, you will not understand. But remember, this concept, this assumption is related to shear center, and when I will explain shear center, I will explain this entire concept कि ये assumption क्यों जरूरी है. Okay, so do you understand this assumption? So whatever cross section we will consider in the entire bending stress in beams, you will see that all those cross sections are symmetric about this axis, okay. अपने coordinate system के हिसाब से this is y axis, right? हमारे coordinate system के हिसाब से ये y axis है, तो जितने भी cross section हम लेंगे आप देखोगे कि ये सारे cross section y axis के about symmetric होते हैं. हो सकता है ये horizontal axis के about symmetric ना हो, maybe it will not be symmetric about this horizontal axis, but it will always be symmetric about the vertical axis, ठीक है. For example, rectangle, circle, triangle, I section, T section, whatever section. कौन से सेक्शन आप नहीं देखोगे, कौन से सेक्शन आप नहीं देखोगे, आप ये वाला सेक्शन नहीं देखोगे. You will never see this type of section in your questions, है ना. ये वाला सेक्शन आप नहीं देखोगे. ये वाला सेक्शन हम क्यों नहीं देखेंगे, because it is not symmetric about the plane of loading, right? ये अपना plane of loading के about symmetric नहीं है, right? You will never see this type of section, L section. ये L section भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. Why you will never see this type of section? Because this is also not symmetric about the plane of loading, right? तो बेटा आपको इस टाइप के सेक्शन जो है वो कभी बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्लेन ऑफ लोडिंग के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है. ओके, सो यू विल नेवर सी दिस, यू विल नेवर सी दिस, यू विल ओनली सी दीस सेक्शन. ठीक है, ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा. ओके, so beta this assumption is also very important. So do you understand the meaning of all these assumption? हर एक assumption का एक बहुत important meaning है और वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो बेटा वो 1 मार्क के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको ये सारी थ्योरी जो है क्लियर हो. ठीक है, सो इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ let's understand some other concepts behind the bending stress. So beta, neutral layer, let's understand what is neutral layer.
देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द बीम. ओके, अगर मेरी ये बीम है तो मैं देखूंगा कि देयर आर डिफरेंट लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स. दिस इज द टॉप लेयर, दिस इज द बॉटम लेयर. सेंटर से कट करोगे देयर विल बी अ सेंटर लेयर. नाउ व्हेन द बीम बेंड्स then every layer deforms. When the beam bends, then every layer deforms, but there is one layer which does not deform, which remain same in length. मतलब जब बीम बेंड होगी हर एक लेयर की लेंथ चेंज होगी, लेकिन एक ऐसी लेयर होगी जिसकी लेंथ चेंज नहीं होगी. दैट अनडिफॉर्म्ड लेयर इज द न्यूट्रल लेयर. ठीक है, यूजुअली इट विल बी एट द सेंटर. ओके, नाउ neutral axis, very important, because throughout the bending stress you will use this neutral axis, neutral axis, neutral axis. So it is very important to understand what is neutral axis and where do we get it. Okay, so neutral axis is the axis about which the beam is going to bend. मतलब जब बीम बेंड होगा, बीम जब ऐसा बेंड होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, राइट? इफ आई एम बेंडिंग अ बीम लाइक दिस, इफ आई एम बेंडिंग अ बीम लाइक दिस, आई एम बेंडिंग इट अबाउट सम एक्सिस, राइट? दिस बेंडिंग मोमेंट is acting about some axis. ठीक है, ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट है ये किसी एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये किसी एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो वो जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, दैट एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. नाउ वेयर डू वी गेट द न्यूट्रल एक्सिस? द न्यूट्रल एक्सिस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस विद द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल लेयर के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है, that is the neutral axis. Now in order to understand that, we have this beautiful diagram. Understand, I have considered one part of the beam. ठीक है, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर कर रहे हैं बीम का. Let's understand, this is what? This is the neutral layer. ये क्या है अपना neutral layer. Okay, so बेटा if I cut the beam using the neutral layer, अगर मैं neutral layer से beam को cut करता हूं, if I cut the beam using the neutral layer, then this neutral layer will cross the cross section, will cut the cross section along a line. ये neutral layer जो है वो cross section को एक line पे cut करेगा, right? That line is the neutral axis. तो बेटा अगर मैं इसका cross section के साथ intersection देखूं, this is the cross section, this is the neutral surface, then this is what? This is neutral axis. According to our coordinate system, what is the neutral axis? Z axis is the neutral axis. ठीक है, अपने क्रॉस सेक्शन, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इफ दिस इज द बीम, अगर ये बीम है, देन दिस इज द एक्स एक्सिस along the length of the beam, this is the y axis, plane of loading, and this is the z axis, neutral axis about which the beam is bent. बीम जो है वो इस z एक्सिस के अबाउट ही बेंड हो रही है ना. मैं ये जो कपल लगा रहा हूं, ऑल दिस कपल, ठीक है, ये कपल जो लग रहा है, ये कपल जो लग रहा है, ये क्या है? दिस इज mz, दिस इज mz. ये जो कपल लग रहा है, ये कपल क्या है? दिस इज mz, ये mz है. ठीक है, ये जो कपल लग रहा है ये mz है, z एक्सिस के अबाउट लग रहा है. सो दैट z एक्सिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, अब ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये पता होना बहुत जरूरी है. ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेंडिंग की इक्वेशन बनती है वो इसी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बनती है. ओके, सो बेटा द न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन is very important to find. Okay, the location of neutral axis must be known, then only you will be able to calculate the bending stress. Okay, when I will tell you the equation, then I will tell you why the neutral axis location is important. ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन नहीं पता है तो आप बेंडिंग की इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे. So in order to use the equation of bending, we need the location of this neutral axis. Okay, so where we will get the neutral axis? Exactly where we will get the neutral axis? Understand beta, neutral axis always passes through the centroid of the section if these two conditions are met, if these two conditions are satisfied. neutral axis जो है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास होता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. नाउ व्हाट आर दोस कंडीशंस? अंडरस्टैंड, द मटेरियल इज होमोजेनियस and there is no plastic deformation. If these two conditions are satisfied, then
the neutral axis passes through the cross section. Otherwise, if these conditions are not satisfied, the neutral axis can be above or below the centroid. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंट्रॉइड से पास होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. अगर न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड से अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है सेंट्रॉइड से पास ना हो. Is this point clear to everyone? Because you might get theory question from this also. ये जितने भी टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, सो बेटा न्यूट्रल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड इफ फर्स्ट द मटेरियल इज होमोजेनस. अब आप बोलोगे नॉन होमोजेनस मटेरियल कब मिलेगा? तो बेटा अगर मान लो लेट्स से वी हैव अ वुडन बीम, मान लो एक वुडन बीम है और उसके ऊपर मैं एक स्टील की प्लेट लगा देता हूं. इफ आई पुट अ स्टील प्लेट, so now it has become a non homogeneous material, right? This much beam is made of wood, this much beam is made of steel, so this has become a non homogeneous material. So in this case the neutral axis will not pass through the centroid. Okay, so non homogeneous means whenever there is two material or three materials involved in the cross section, then it becomes non homogeneous. In that case the neutral axis should not, in that case the neutral axis not necessarily passes through the centroid, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है. ठीक है, second point is plastic deformation नहीं होना चाहिए. Now we are assuming stresses are within proportional limit, so obviously there will be no plastic deformation, right? अपना पहले ही assumption है कि plastic deformation नहीं हो रहा है because the stresses are within proportional limit. So बेटा that's why neutral axis will not pass through the centroid. Sorry, neutral axis will pass through the centroid because हम plastic deformation consider नहीं कर रहे हैं. Okay, now understand where will you get the centroid? All these cross sections have known centroid. इनका centroid जो है वो अपने को already पता होता है. For example, centroid of rectangle will be at the center, centroid of circle will be at the center, centroid of triangle will not be at the center. ये base से कितने पे होगा? Base से it will be at h/3 और top से 2h/3. Centroid of this symmetric I section will be at the center. T section का centroid आप calculate कर सकते हो. So बेटा if you find the centroid of the cross section means you have got the neutral axis of the cross section. ठीक है, अगर centroid पता है तो neutral axis पता है, क्योंकि ये दो assumption हम लेके चलते हैं that the material is homogeneous and there is no plastic deformation. Is it clear to you? तो ये point भी clear है कि जो neutral axis है वो हमेशा centroid से पास होता है अगर ये दो criteria fulfill हो रहे हैं, if these criterias are fulfilled. Okay, now let's see the equation of bending. So beta Euler-Bernoulli's beam theory के according to Euler-Bernoulli's beam theory we get this equation of bending. Sigma by y equals to m by I equals to E by R. This is the equation of bending. This is the equation of bending. Now one by one we will see the meaning of each and every point here. यहाँ हर एक point का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले. So बेटा what is this sigma? This is the bending stress. This is the bending stress at a point. This is the bending stress at a point. What is y? It is the vertical distance of the point, vertical distance of the point from neutral axis. Now understand beta, sigma by y in this equation, sigma is the bending stress at a point. So at different points bending stress must be different. We have already seen the variation of bending stress. मैंने आपको already variation बता दिया है bending stress का. So you can see that the bending stress is not constant from top to bottom. So at any point, if you want to calculate the bending stress, what do you need? You need the location of that point from the neutral axis. That's why it is important to know the location of neutral axis. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है कि neutral axis का location पता होना क्यों जरूरी है? Because if you don't know the location of neutral axis, how will you calculate y? And if you don't know y,
how will you calculate sigma? So sigma is the bending stress and y is the vertical distance of the point where you are calculating sigma from neutral axis. Okay, तो ये दोनों point clear है. Now what is m? M is obviously the bending moment. M is obviously the bending moment at the section. ठीक है. What is I? Now understand this. This is also a very important point. I is the moment of inertia. I is the moment of inertia of cross section about neutral axis. Okay, I क्या है? I is the moment of inertia of the cross section about the neutral axis. Now we should know the equation of moment of inertia for different sections. तो आगे मैं आपको बताऊंगा what is the equation of moment of inertia for different section and you need to remember them. Okay, if you don't know the meaning of moment of inertia, then you should see my special class on moment of inertia. Okay, you will find it at tinyurl.com/approve10. Go in that drive. You will get the Excel sheet of special classes. You will find my special class on moment of inertia. I have explained everything about moment of inertia in that class. So go and watch that class and all your concepts about moment of inertia will be crystal clear. ठीक है? So I cannot take a lot of time explaining this right now because understanding bending stress calculation is more important right now. तो इसीलिए मैं अभी मैं इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा. Okay, so I is the moment of inertia of the area about the neutral axis. और ये क्या signify करता है? It signifies the distribution of area about the neutral axis. Neutral axis से area कितना दूर फैला हुआ है, moment of inertia आपको basically ये बताता है. ठीक है? What is moment of inertia? How far the area is distributed from neutral axis. Area neutral axis से जितना दूर तक फैला होगा, I उतना ज्यादा होगा. एरिया न्यूट्रल एक्सिस के जितना पास होगा, यानी पॉइंट्स जितने न्यूट्रल एक्सिस के पास होंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी हाई. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो बॉडी जो है, क्रॉस सेक्शन जो है, वो ज्यादा मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा. आगे मैं समझाऊंगा क्यों. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए. ओके, देन E इज द यंग्स मॉड्यूलस. E is the Young's modulus and R is the radius of curvature. अब radius of curvature बोलने का मतलब क्या है बेटा? What do we mean by radius of curvature? तो बेटा ये जो beam bend हो रही है, this beam is bent like this. ये जो beam bend हो रही है, मैं क्या assume कर रहा हूं? That it is bent like a सर्कुलर आर्क. ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि ये सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो रहा है. राइट, मैं ये मान रहा हूं कि ये सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो रहा है. तो इस सर्कुलर आर्क का कोई ना कोई रेडियस होगा. राइट, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर आर्क. सो दिस आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर. बीम जितनी ज्यादा बेंड होगी उतना कम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, अगर बीम स्ट्रेट है, इफ द बीम इज स्ट्रेट, देयर इज नो बेंडिंग, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देन आर विल बी इंफिनिटी. इफ द बीम इज स्ट्रेट, देन आर विल बी इंफिनिटी, एंड इफ यू इंक्रीज द बेंडिंग, इफ यू इंक्रीज डिफॉर्मेशन, आर विल डिक्रीज. ठीक है, तो जितना कम आर उतना ज्यादा बेंडिंग, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन. जितना कम आर उतना ज्यादा बेंडिंग, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन. इज दिस क्लियर टू यू? सो बेटा, द मीनिंग ऑफ ऑल दीज parameters are clear. What is sigma, what is y, what is m, what is I, what is E, what is R, right? So beta, we will use this equation to calculate the bending stress in different condition. ठीक है, अलग अलग condition में bending stress निकालने के लिए हम ये equation use करेंगे. ठीक है, now in order to use this equation, if you want to calculate bending stress using this equation, you either need the loading condition, या तो आपको लोडिंग कंडीशन पता होना चाहिए. लोडिंग कंडीशन मींस यू शुड नो हाउ द बीम इज सपोर्टेड एंड हाउ द बीम इज लोडेड. फॉर एग्जांपल, वेदर इट इज कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड. इफ इट इज कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, देन वेदर इट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड और यूडीएल और यूवीएल, हाउ द बीम इज लोडेड. व्हाई डू वी नीड टू नो दैट? because then only you will be able to calculate moment of, sorry, bending moment.
Okay, in order to calculate sigma, you need bending moment, right? So beta, in order to calculate bending moment, you need the loading condition. तो या तो loading condition पता है, तो I will calculate bending moment and then I will use this relation sigma by y equal to m by I. Or if you don't know the loading condition, अगर loading condition नहीं clear है, then you should know the radius of curvature. So if the radius of curvature is given, then also you can calculate the bending stress using the relation sigma by y equals to E by R. So either m should be known or R should be known. अगर m पता है तो sigma by y equal to m by I, और अगर R पता है तो sigma by y equals to E by R. So in order to calculate bending stress, you need any one of these things. अगर आपको bending stress निकालना है तो इनमें से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, या तो bending moment यानी loading condition या फिर radius of curvature. Is this clear? We will see both types of problems. ठीक है, हम दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे. Okay, all right. Now बेटा, there are certain other parameters which you need to understand. ठीक है, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेक्शन मॉड्यूलस. ओके, नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन सेक्शन मॉड्यूलस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस how the beam is going to bend. Okay, so there are two conditions which you will see. The first condition that you will see is when the cross section is symmetric. जो पहली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो होगी जब क्रॉस सेक्शन आपको सिमेट्रिक मिलेगा. ओके, सो इन केस ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, the y will be at the neutral axis will be at the center, है ना. अगर symmetric cross section है, if the cross section is symmetric, then the neutral axis will be at the center. और अगर neutral axis center पे है, then you will see that the bending stress at top and the bending stress at bottom are going to be equal, right? Bending stress at top and bending stress at bottom are going to be equal, right? So यहाँ पे मान लो this is sigma maximum in tension and this is sigma maximum in compression. So sigma max in tension and compression are equal. Maximum tensile stress or maximum compressive stress इस केस में equal है. Okay, in case of rectangle, in case of circle, in case of I section, symmetric I section. But let's say we have a T section. So neutral axis here is not at the center. You will see that neutral axis is closer to the top. So beta, at the top y will be less, so sigma will be less, and at the bottom y will be more, so sigma will also be more. So you will get this type of distribution. So you can see here that sigma maximum in tension is not equal to sigma maximum in compression. Okay, so beta, what does it mean? It means that if you have an unsymmetric section, then you have to calculate maximum tensile stress and compressive stress separately, because you will get two different values. But in case of symmetric sections, you will only have to calculate one value, because maximum tensile stress and compressive stresses are same. तो अगर न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे है तो टेंशन में और कंप्रेशन में स्ट्रेसेस बराबर होंगे, बट अगर न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे नहीं है, ऊपर नीचे है, तो टेंशन में स्ट्रेस अलग आएगा, कंप्रेशन में अलग आएगा, आपको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे. नाउ यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज 99.99% चांसेस आर that you are going to get a question from symmetrical section. Okay, till now there has never been a question of bending stress, calculation of bending stress from unsymmetrical section, because these questions will become very lengthy. ठीक है, T section के ऊपर जो question आएगा वो बहुत lengthy हो जाएगा, because finding the neutral axis alone will take a lot of time. ठीक है, इसमें neutral axis ढूंढने में ही बहुत time निकल जाएगा. ठीक है, so that's why they never give questions from unsymmetrical section. You will always get questions from symmetrical section like circle, rectangle, I section. इस टाइप के simple triangular section से आ सकता है, because we already know the neutral axis of triangular section. But T section के ऊपर question नहीं आता है, क्योंकि T section में neutral axis ढूंढना पड़ता है, and that takes a lot of time, that takes a lot of calculation. Okay, now let's understand what is section modulus. This is a very important topic from theory point of view, and you will also get numericals based on section modulus. Section modulus के ऊपर numerical भी आते हैं, ठीक है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. So बेटा, understand what is section modulus.
So section modulus is the measure of the strength of a beam. And by strength of beam, what do I mean? Strength of beam बोलने का मेरा मतलब क्या है? Strength of beam means maximum applicable bending moment. How much bending moment you can apply on the beam? That is the strength of the beam. ठीक है? If I have two beams and I need to know which one is stronger, then I will see which can sustain more bending moment. ठीक है? कौन कितना बेंडिंग मोमेंट उठा सकता है, दैट इज द स्ट्रेंथ. ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ बीम बोलने का मतलब क्या है कि ये बीम जो है कितना बेंडिंग मोमेंट उठा सकता है. नाउ अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मींस हाउ मच स्ट्रेस इट कैन सस्टेन. Strength of material means how much stress it can sustain, and strength of beam means how much bending moment it can sustain. Strength of shaft means how much twisting moment it can sustain. Strength of bar means how much axial load it can sustain. So beta, strength of any member is how much load it can sustain without failure. किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि वो मेंबर कितना लोड झेल सकता है बिना फेल हुए. अगर मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूं तो वहां मैं देखूंगा कि ये कितना टॉर्क झेल सकता है. अगर मैं बीम की बात कर रहा हूं तो यहां मैं देखूंगा कि ये कितना बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम? नाउ इफ यू वांट टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस बीम इज, अगर आपको ये देखना है कि ये बीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, then you calculate the section modulus. So what is section modulus? Section modulus is the measure of the strength of the beam. If the section modulus is more, then the beam is stronger, and if the section modulus is less, then the beam is weaker. So let's see what is the equation of section modulus. So I will use this equation, sigma maximum by y maximum equal to m by I. Now maximum bending moment I will get when this sigma maximum is equal to the strength of the beam, है ना. मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा? जब सिग्मा मैक्स में किसके बराबर तक ले चला जाऊंगा? स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. क्योंकि उससे ज्यादा अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट लगाया तो बीम का जो मटेरियल है उससे ज्यादा स्ट्रेस, उससे अगर उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा एंड मटेरियल इज गोइंग टू फेल, है ना. तो मैं सिग्मा मैक्सिमम जो है कहां तक लेके जा सकता हूं? सिग्मा, अगर आप बेंडिंग मोमेंट बढ़ाते जाओगे सिग्मा मैक्स बढ़ता जाएगा. तो मैं बेंडिंग मोमेंट बढ़ा रहा हूं, सिग्मा मैक्स बढ़ रहा है, कहां तक लेके जा सकता हूं? अप टू विच पॉइंट आई कैन टेक इट? अप टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट. तो बेटा मान लो सिग्मा मैक्स जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बराबर पहुंच गया है. तो बेटा सिग्मा मैक्सिमम into I by y maximum, I can write it like this, right? Now beta, in this equation this parameter is related to the cross section and this parameter is related to the material. ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, राइट. और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर बेस्ड है. सो बेटा दिस पैरामीटर इज नोन एज द सेक्शन मॉड्यूलस. इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से. सो बेटा इट इज रिटन लाइक दिस, M इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इनटू Z. अब जितना ज्यादा Z उतना ज्यादा सिग्मा बेंडिंग मोमेंट, यानी कि मैं उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर लगा सकता हूं, ये उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है. सो व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस? सेक्शन मॉड्यूलस Z is equal to I upon y maximum. Section modulus Z is equal to I upon y maximum. अब मान लो let's say you have the choice of different types of cross sections. ठीक है, मान लो आपके पास अलग अलग क्रॉस सेक्शन की चॉइस है. Let's say you have a circular beam, let's say you have a rectangular beam, and let's say you have एन आई सेक्शन. ठीक है, आपके पास अलग अलग क्रॉस सेक्शन की चॉइस है, सबका एरिया बराबर है. ओके, द एरिया ऑफ एवरी सेक्शन इज सेम, द एरिया ऑफ एवरी सेक्शन इज सेम. एरिया जो है वो सारे सेक्शंस का बराबर है. ठीक है, नाउ यू नीड टू सी विच क्रॉस सेक्शन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. कौन सा क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो बीम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी. ओके, आई वॉन्ट टू सी कि कौन सा क्रॉस सेक्शन मैं यूज करूं ताकि मेरी बीम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो. ओके,
सो बेटा आई विल कंपेयर देयर z, जितना ज्यादा z उतना ज्यादा m, जितना ज्यादा z उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट झेलने की ताकत. सो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू कंपेयर in the equation of z, this y maximum does not affect the value that much because y maximum for every cross section will be almost same. Okay, so there will be not much difference in y maximum. Y maximum में उतना ज्यादा difference नहीं होता है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि difference बिल्कुल नहीं होता है. मतलब जैसे मैंने डायग्राम बनाया आप देख सकते हो, इसका y maximum इतना है, इसका y maximum थोड़ा सा ज्यादा है, इसका y maximum और ज्यादा है, तो y maximum जो है वो उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि लगभग सबका बराबर रहेगा. ठीक है, बट द मेजर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय आई. ज्यादा डिफरेंस किससे क्रिएट होता है? द मेजर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय आई. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. If the area is distributed far from neutral axis, I is more. If the area is close to neutral axis, I is less. So beta I have already explained what is moment of inertia. तो बेटा अब आप बताओ कि किसका एरिया न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा दूर तक फैला है. ये ज्यादा दूर तक फैला है, ये ज्यादा दूर तक फैला है कि ये ज्यादा दूर तक फैला है? किसके पार्टिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा दूर है? सो बेटा ऑब्वियसली this I section is distributed away from neutral axis, right? ये ज्यादा दूर तक फैला हुआ है न्यूट्रल एक्सिस से, तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा दूर फैला है तो इसका I सबसे ज्यादा होगा, और अगर इसका I सबसे ज्यादा होगा तो इसका Z भी ज्यादा होगा. ठीक है, और किसका एरिया न्यूट्रल एक्सिस से सबसे कम दूर तक फैला है, मतलब सबसे पास में है? सो यू कैन इजीली से दैट द एरिया व्हिच इज क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल एक्सिस इज दिस. इसके पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के क्लोज है, तो इसका I सबसे कम होगा, यानी इसका Z सबसे कम होगा. सो बेटा फॉर द सेम एरिया Z of I section will be maximum and Z of circular section will be minimum. अगर आपके पास चॉइस है कि आपके पास ये तीन एरिया हैं, तो बेटा सबसे बेस्ट एरिया बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा होगा? आई सेक्शन. एंड दैट इज व्हाई द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स इज आई सेक्शन. रेलवे ट्रैक्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, राइट? व्हेन द ट्रेन पासेस ओवर द रेलवे ट्रैक्स दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. वो बेंड होते हैं रेलवे ट्रैक्स. ये रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो रेलवे ट्रैक्स बेंड लाइक दिस. ओके, सो बेटा ड्यू टू दिस the railway tracks have I cross section because they will be the strongest cross section. उनका cross section जो होगा वो सबसे strongest होगा. Is this point clear to you? क्या ये point आप सबको clear है? Hit the like button if it is clear to you. अगर आपको ये crystal clear हो रहा है तो please like button दबा दीजिए और share कीजिए इन videos को. अभी भी मैं देख रहा हूं कि जितने मुझे बच्चे चाहिए उससे बहुत कम है, तो प्लीज शेयर कीजिए. शेयर जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरी एनर्जी दिखेगी आप लोगों को. ओके, ऑल राइट. सो बेटा इज दिस क्लियर टू यू? व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस एंड वेयर डज इट कम इनटू पिक्चर? ये पिक्चर में कहां आता है, ये चीज क्लियर है? ये पिक्चर में कहां आता है बेटा? अगर आपको क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है, इफ यू वांट टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन यू विल सी दैट सेक्शन मॉड्यूलस शुड बी मैक्सिमम. जितना ज्यादा सेक्शन मॉड्यूलस उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, यस. थैंक यू सो मच. नाउ another very important thing, you need to remember the equations of moment of inertia. अब z की इक्वेशन याद नहीं भी रहेगी चलेगा, because you can calculate z by I upon y maximum, but in order to calculate that you need to remember the equation of I. So let me tell you the equation of I for different section. अलग अलग सेक्शन के लिए मैं I की इक्वेशन आपको बता देता हूं. Okay, so let's say we have this cross section. ठीक है, मान लो अपने पास ये क्रॉस सेक्शन है. Okay, let's say the width is b, neutral axis will be at the center. तो अगर height h है then this will be h by 2, this will be h by 2. What will be y maximum here? The y maximum will be h by 2. And what is the moment of inertia about the neutral axis? It will be bh cube by 12. So this is rectangular cross section and सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है
वो रेक्टेंगुलर सेक्शन से ही आते हैं, सबसे ज्यादा सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन से ही आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच प्रसाद। नाउ बेटा व्हाट विल बी z, I by y maximum, you will get bh square by 6. So for a rectangular section, z is bh square by 6. Okay. Then for a circular section, let's say the diameter is d. So neutral axis will be passing through the center. So it will be d by 2, d by 2. So what will be y maximum? Y maximum will be d by 2. What will be I about neutral axis? Pi by 64 d to the power 4. And I by y max अगर मैं करता हूं then I will get pi by 32 d cube. So this is the z of the circle. Even if you don't remember these equation, don't worry beta, this is not important, this is important to us because if I know this I can easily find this, ठीक है। Then hollow circular section, ठीक है। तो hollow circular section है, मान लो let's say this is inner diameter and let's say this is outer diameter, ठीक है। So what will be y maximum? Y maximum will be outer diameter by 2. And what is moment of inertia? It is pi by 64 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4. And what will be z? अब यहां पे देखो बेटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, pi by 64 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं pi by 64 d outer to the power 4 1 minus k to the power 4, जहां पे k क्या है, what is k? k is d inner by d outer, ठीक है। तो मैं अगर d outer to the power 4 को कॉमन ले लेता हूं then I will get this, okay। So बेटा if you know this, if you have the equation in this term, then z will be pi by 32 d outer cube 1 minus k to the power 4. Okay, so a lot of times we use the equation in this term, otherwise you can use it in this term also, okay। Then beta another hollow circle, but this hollow circle is a little different. अब ये वाला hollow circle और ये वाला hollow circle अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? Understand it. बेटा in this hollow circle the thickness is very small compared to the diameter. Let's say this is the diameter, ठीक है, मान लो ये diameter है and let's say this is the thickness, ठीक है। So here thickness is very small compared to diameter. Now don't ask me whether it is internal diameter or external diameter, because if thickness is very small it doesn't matter whether it is internal or external diameter, है ना। Obviously अगर thickness बहुत कम है तो फिर ये internal diameter हो या external diameter हो almost same ही होगा, right? So बेटा if we have a cross section like this, बहुत small thickness का, then your y max will be d by 2 and your I is pi d cube t by 8. Now this is a simple equation compared to this, okay। The actual equation should be this, actual equation तो ये होनी चाहिए, लेकिन in order to simplify we are writing it like this, okay, pi d cube t by 8. Now beta where will you get this type of cross section? In machine design you have already seen this. Machine design में I have explained this cross section in case of welded joints. Welded joint में ये वाला cross section मैंने use किया था, welded joint में ये वाला question मैंने use किया था, ठीक है। So बेटा ये जो cross section है hollow circular section but very negligible thickness, ये बहुत जगह use करेंगे। Strength of material में we will use this in thin cylindrical pressure vessel. Thin cylindrical pressure vessel में ये वाला cross section आएगा, okay। Now बेटा what will be z? Z will become pi d square t by 4, ठीक है। So this is z of hollow circular section with negligible thickness, ठीक है। Then triangular section, तो बेटा let's say the width is b, height is h, so this will be h by 3 and this will be 2h by 3. What will be y maximum? Y maximum will be 2h by 3. And what will be I, moment of inertia about neutral axis? bh cube by 36, bh cube by 36, and z by y maximum will give you bh square by 24. This is for triangular section. This is what triangular section. Yes. Now I section. अब I section के लिए भी
आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन याद रख सकते हैं। हाउ बेटा? आई सेक्शन के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान होता है इफ इट इज अ सिमेट्रिक आई सेक्शन। सिमेट्रिक आई सेक्शन मींस द फ्लेंजेस आर इक्वल, इक्वल फ्लेंजेस होने चाहिए टॉप पे और बॉटम में। दिस इज नोन एज फ्लेंज, दिस इज नोन एज वेब, द वर्टिकल पार्ट इज नोन एज वेब, द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज नोन एज फ्लेंज। सो इफ द फ्लेंजेस आर इक्वल then it is a symmetric I section, means this neutral axis will be at the center. So for this, calculating moment of inertia is very simple. How do we do that? Understand. Okay, let's say the total height is capital H and the total width is capital B. Okay, let's say this is T1, this thickness is T1, and let's say this thickness is T2, this thickness is also T2. Okay, so what will be Y maximum here? Y maximum will be obviously H by 2, right? What will be I? Now understand beta how I am going to calculate I. Okay, in order to calculate I of this I section, I am going to assume it like a complete rectangle. तो ये अगर एक complete rectangle है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कैपिटल बी एच क्यूब बाय 12, राइट? अब उसमें से इफ आई सबट्रैक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल प्लस स्मॉल रेक्टेंगल, इस छोटे छोटे रेक्टेंगल, ये जो खाली स्पेस है इसको मिला के एक छोटा रेक्टेंगल बना दूं, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी स्मॉल बी एच क्यूब बाय 12, है ना? नाउ बेटा व्हाट विल बी स्मॉल बी? इट विल बी कैपिटल बी। स्मॉल बी कितना हो जाएगा? स्मॉल बी विल बी कैपिटल बी माइनस T1 एंड व्हाट विल बी स्मॉल h? कैपिटल H माइनस 2T2, है ना? स्मॉल h क्या होगा? कैपिटल H माइनस 2T2। तो पूरा रेक्टेंगल माइनस ये खाली स्पेस का रेक्टेंगल विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। z देखने की जरूरत नहीं है, okay, because anyway you will not remember the equation of z, you have to remember the equation of I. So beta these are the cross sections which are important for us from exam point of view, so you need to remember their moment of inertia equation, ठीक है? इनकी moment of inertia की equation आपको याद रखनी है, okay? Is this clear? Yes, okay. Now beta flexural rigidity and flexural stiffness, these two terms are also important, they are related to the deformation. What is flexural rigidity? Flexural rigidity क्या है? Flexural rigidity is equal to EI, ठीक है? तो अगर EI ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन कम होगा, ओके? इफ EI is more, डिफॉर्मेशन is less, ओके? तो बेटा बीम जितना ज्यादा बेंड होगा, बीम जितना ज्यादा बेंड होगा उसका R उतना कम होगा, राइट? उसका R उतना कम होगा, यानी उसकी EI की वैल्यू उतनी कम होगी। अंडरस्टैंड बेटा? सिग्मा m by I equals to E by R, right? तो यहां से I can write R is inversely proportional to 1 upon EI. तो अगर EI ज्यादा तो R की वैल्यू सॉरी R will be proportional to EI, okay? तो अगर EI ज्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा, मतलब उतना कम बेंड, है ना? जैसे मान लो ये है, ठीक है, और ये है, तो इन दोनों में ज्यादा बेंडिंग किसमें हो रही है? इसमें हो रही है, और कम, इसका R जो है वो कम है ना? तो बेटा R कम है मतलब इसका EI भी कम है ना? कम बेंडिंग इसमें हो रही है, इसका R ज्यादा है, यानी इसका EI भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा EI उतना ज्यादा R, मतलब उतनी कम बेंडिंग। तो बीम कितना बेंड होगा? इफ आई अप्लाई बेंडिंग मोमेंट M, हाउ मच इट इज गोइंग टू बेंड, that depends upon the value of EI. If EI is more, R is more, means bending is less. If EI is less, R is less, means bending is more. Is it clear? Now flexural stiffness is what? Flexural stiffness is given by EI by L. So you can say that it is flexural rigidity per unit length. Just like axial rigidity and axial stiffness. Axial rigidity was what? A into E. Axial stiffness was what? AE by L. Just like that, flexural rigidity and flexural stiffness, they are related to the deformation. ये जो है deformation से related है, ठीक है? Is it clear? Is it clear? Yes, yes, yes. चलो
Now beta, let's solve the numericals based on the calculation of bending stress. ठीक है, bending stress के calculation पे numericals को solve करते हैं. Okay, so let's solve this first numerical. Now beta, I told you that in the numericals of bending stress, you will either be given the loading condition so that you can calculate M, or you will be given the radius of curvature. Okay, so beta, या तो आपको M निकालने का सामान दिया होगा या तो R दिया होगा. So if M is given, you use sigma by y equal to M by I. If R is given, you use sigma by y equals to E by R. So in this question, what is given? Understand. Consider an elastic straight beam of length L equal to 10 pi meter with square cross section of side A equal to 5 mm and Young's modulus E equal to 200 gigapascal. This straight beam was bent in such a way that the two ends meet to form a circle of mean radius R. मतलब हमने क्या किया, इस बीम को बेंड करके एक सर्कल बना दिया. ओके, दिस वाज एन इनिशियली अ स्ट्रेट बीम, आई हैव बेंट इट ताकि ये दोनों एंड जो है, ये वाला एंड और ये वाला एंड मिल जाए. ठीक है, तो ये एक सर्कल. Am I back? Am I back? Yes, I think I'm back. चलो चलो चलो. Okay, so beta, let's calculate the value of sigma maximum here. So in order to calculate sigma max, first I need the value of R. So how am I going to calculate the value of R? Understand beta, here I had a beam L. Okay, I had a straight beam L and then I bent it into a circular arc. So beta, ये जो perimeter है, ये जो circumference है इसका, ये कितना होगा? The length of this circumference, the perimeter of this circle will be equal to what? L will be equal to 2 pi R, right? Now what is L? 10 pi meter. So from here I am going to get R equals to 5 meter. So I have the value of R now and I need to calculate sigma. So beta, what equation I am going to use? I am going to use this. Sigma maximum by y maximum. Okay, if you want sigma maximum, then y will be y maximum equals to E by R. So sigma maximum will be E into y maximum by R. Now what is the Young's modulus here? Young's modulus here is 200 gigapascal. So I will write it 200 into 10 to the power 3 megapascal. What is y maximum? Understand beta, what is the cross section? Cross section is a square. Cross section जो है वो एक square है. Cross section is a square of side 5 mm. So if this is the neutral axis, then this will be 2.5. This will be 2.5. So y maximum will be 2.5 mm. And R we have just calculated 5 meter, means 5 into 10 to the power 3. So from here I am going to get sigma maximum equal to what? कितना आ रहा है? How much? 200 into 10 to the power 3 into 2.5 divided by 5 into 10 to the power 3. So it is 100 megapascal. It is 100 megapascal in tension as well as in compression, right? Tension may be, compression may be, you will get the same thing. Yes, 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 yes. Very good beta, very good. Now beta, this is a GATE question, 2 marks question. ये GATE में आया है 2019 में and it was a 2 marks question. Okay, so beta, you can see how easily you can solve even the problems of GATE if your concepts are very clear. अगर आपके concept बहुत clear हैं तो आप गेट का क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से करोगे. आपको लगेगा अरे ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, बट बेटा एक्चुअल में आसान नहीं है. एक्चुअल में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से आपको आसान लग रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अरे गेट में तो इतने आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है, अगर क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो, तो यही क्वेश्चन फिर आपको टफ लगेंगे. इन्हीं में छोटी छोटी गलतियां होती हैं और फिर बच्चे बाहर निकल के बोलते सिली मिस्टेक हो गया. तो बेटा सिली मिस्टेक नहीं होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसीलिए वो छोटी छोटी गलतियां होती है. ठीक है,
Yes, yes, yes. Very good, very good, very good. Now beta, let's move on to the next question. So the next question is, a simply supported beam of width 100 mm, height 200 mm and length 4 meter is carrying a uniformly distributed load of intensity 10 kilonewton per meter. The maximum bending stress in the beam is. Now this is another question from GATE. ये भी GATE का ही question है. I am trying to explain what type of question you can expect in GATE. That's why I am doing these questions. Okay, हम लोग GATE के अलावा भी questions करेंगे. GATE के अलावा भी हम लोग और questions practice करेंगे, ठीक है? But बेटा पहले समझ लेते हैं GATE में कैसे question expect कर सकते हो. Okay, now बेटा understand. In this case, loading condition is given. So we can calculate the bending stress using the equation of bending moment. Bending moment से आप निकाल सकते हो. अब बेटा simply supported beam with symmetric loading. So beta, in this case, the bending moment will be maximum at the center. Understand? Simply supported beam है और symmetric loading है, तो bending moment हमेशा center पे maximum आता है. Okay? If you draw the bending moment diagram in this case, you are going to get a diagram like this. अगर आप bending moment diagram बनाते हो इसका, तो आपको कुछ इस तरीके का diagram देखने को मिलेगा. You will get a diagram like this. Bending moment diagram is this, and this M maximum will be equal to what? WL square by 8. ठीक है, WL square by 8. If you want, you can calculate it. अगर चाहते हो तो ये calculate कर सकते हो, but बेटा if you want to save time, then just memorize this. ठीक है, अगर आपको time save करना है तो बस इसको याद रख लो, WL square by 8. ठीक है, इसको याद रख लो, WL square by 8. तो बेटा अब इसको कैसे M maximum कैसे निकालेंगे? फट से M maximum निकाल लो. So what is W? M maximum is WL square by 8. So what is W? W is 10. What is the length? Length is 4 divided by 8. तो ये कितना आ जा रहा है? M maximum is how much? ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर, right? Now what is the cross section? The cross section is a rectangle with width of 100 mm and height of 200 mm, right? क्रॉस सेक्शन जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है 100 और हाइट है 200. ठीक है, अब यहाँ ये याद रखना बेटा, जब भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है यूजुअली विड्थ 100 विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज सो? बिकॉज बेटा द z of rectangle is bh square by 6. So if h is more, z will be more, means it will carry more bending moment. ठीक है, strength will be more if the height is more. ठीक है, तो अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो हाइट ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ कम होना चाहिए. ठीक है, नाउ बेटा what will be the equation we will use? Sigma maximum here will be m into y maximum by I. Okay, तो sigma maximum क्या हो जाएगा यहाँ? m is 20 किलो न्यूटन मीटर, convert it into Newton mm. किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm. So it will be 20 into 10 to the power 6 Newton mm. What will be y maximum here? Y maximum will be 100, and what will be I? Moment of inertia 100 into 200 cube by 12. BH cube by 12. So beta, what you are going to get? What you are going to get? So I will get 20 into 10 to the power 6 into 12 divided by 200 cube. 100 तो cancel हो जाएगा. So I will get 30 megapascal maximum bending stress in tension as well as in compression, because it is a symmetrical section. So tension compression में the stress will be same, 30 megapascal. Yes, very good. Everyone is getting the answer. Yes, hit the like button everyone. I need at least one like from you. सबसे एक एक लाइक मेरे को चाहिए और सबसे एक एक शेयर भी मेरे को चाहिए. ठीक है, सबके सब लिंक को अभी कॉपी करके अपने अपने ग्रुप्स में कम से कम एक बार पोस्ट किया करो बेटा. ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किया करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा सहयोग दो. ये आप ही का चैनल है, ये आप ही के लेक्चर्स हैं, आप ही को आगे बढ़ाना है, आप ही को आगे ले जाना है. ठीक है, sigma max is 30 megapascal. So beta, look at this question. This is another GATE question, 2 marks question, and how easily you solve this, right? So beta, in case of simply supported beam subjected to UDL, remember M maximum will be WL square by 8. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नाउ ये भी गेट का ही क्वेश्चन है. A 1 meter into 10 mm into 10 mm cantilever beam is subjected to uniformly distributed load per unit length of 100 Newton meter as shown in figure. The normal stress due to bending at P is. अब बेटा अंडरस्टैंड,
In this question also they have given us the loading condition. यहाँ पे भी उन्होंने loading condition दी हुई है और अपने को सिग्मा निकालना है. So बेटा I will calculate the maximum bending moment, then I will calculate sigma. अब cantilever beam के लिए you don't need to remember any formula because in cantilever beam it is very easy to calculate bending moment then and there. ठीक है, on the spot आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से. So what will be the bending moment diagram here? Bending moment diagram जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, right? Bending moment diagram जो है वो कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ bending moment कितना होगा बेटा? 100 into this m maximum will be how much? कितना आएगा? 100 into 1. This will be the load into 0.5. मतलब 50 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर मीटर है, 50 न्यूटन मीटर है ना. दिस इज न्यूटन पर मीटर, सो 50 न्यूटन मीटर है ना. वेरी सिंपल. 100 into 1 लोड एंड डिस्टेंस 0.5, सो 50 न्यूटन मीटर. ठीक है. सो नाउ बेटा आई हैव सिग्मा y मैक्सिमम, सॉरी m मैक्सिमम. सो नाउ आई विल यूज सिग्मा मैक्सिमम इक्वल्स टू m into y मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I. अब m कितना है? 50 न्यूटन मीटर मींस 50 into 10 to the power 3 न्यूटन mm. What will be y maximum? 10 mm into 10 mm. तो बेटा this is a square section. Y maximum will be half of the height, मतलब 5 mm divided by I. So it will be 10 into 10 cube by 12. तो यहां से how much sigma maximum am I getting? कितना sigma maximum आ रहा है देख लेते हैं. 50 into 10 to the power 3 into 5 into 12 divided by 10 to the power 4. So I am getting 300 megapascal. I am getting 300 megapascal. तो तीन क्वेश्चन लाइन से बनाए हैं, 330 और 300. वेरी गुड, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं, सब एक दूसरे से मेल खा रहे हैं. यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सो इज दिस क्लियर? 300 megapascal. Is this clear? Sigma maximum is 300 megapascal. Yes, very good बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. प्लस पे बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते बेटा? प्लस पे बोर्ड पे ना पढ़ाने का रीजन है क्योंकि बेटा प्लस पे बोर्ड पे अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाते पढ़ाते आपके कमेंट्स कैसे देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते आपके कमेंट्स मेरे लिए देखना आसान नहीं होता है, लेकिन प्लस पे जो उनका इंटरैक्टिव बोर्ड, उनका जो इंटरैक्टिव जो उनका लेआउट है वो ऐसा है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपके कमेंट्स देख सकता हूं साइड बाय साइड. ठीक है, तो इसीलिए प्लस पे बोर्ड पे नहीं पढ़ाते. एक और रीजन ये भी है कि बोर्ड पे पढ़ाने पे ज्यादा डेटा खर्च होता है. ठीक है, मेरा नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत हाई स्पीड इंटरनेट है, बट पूरे इंडिया में सब बच्चों के पास हाई स्पीड इंटरनेट होना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप बोर्ड पे पढ़ोगे तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट लगेगा क्योंकि ज्यादा डेटा स्ट्रीम करना पड़ता है. लेकिन अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें कम डेटा स्ट्रीम करना पड़ता है, कम डेटा पे भी आपका आराम से लेक्चर चल जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंटरफेस. ठीक है, तो उनका इंटरफेस उन्होंने ऐसे डिजाइन किया है, अनअकैडमी ने इंटरफेस ऐसा डिजाइन किया है दैट इट हैज बिकम वेरी इंटरैक्टिव. इट इज वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड साइड बाय साइड लुक एट योर कमेंट्स. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नाउ बेटा I have a question as an assignment for you. ये क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट है. मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप हर कोई बच्चा खुद से अटेम्प्ट करे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे. I want every one of you to attempt this question, to solve this question on your own. तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्योर बेंडिंग, वी हैव अंडरस्टूड यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी, व्हाट आर द assumptions in Euler Bernoulli's beam theory, the meaning of every assumption. We have understood what is neutral axis, we have understood where neutral axis will be, we have understood the bending equation, we have understood what will be the variation of stress, we have understood what will be section modulus, what is modulus of rigidity, what is modulus of rigidity, what is flexural rigidity, what is flexural stiffness, and we have also solved a few numericals, and this is your assignment. Okay, and we will have DPP session like this for this also. ठीक है, one DPP session is for shear force and bending moment diagram that will likely be tomorrow at 4 PM. कल 4 बजे हम लेंगे एक DPP सेशन shear force और bending moment diagram की, और बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के ऊपर भी एक डीपीपी होगी. एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट डीपीपी देन आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज follow this telegram channel right now.
ये टेलीग्राम चैनल अभी फॉलो कर लो। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बेटा, इन अ फ्यू आवर्स सिर्फ 3 घंटे बचे हुए हैं फॉर यू टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एट द मिनिमम प्राइस। ठीक है, सबसे कम प्राइस पे अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अब से 3 घंटे यानी आज रात को 12 बजने से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत कम में मिल जाएगा। बेटा याद करो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपको पड़ता है आफ्टर 10% डिस्काउंट 22,500 पड़ता है और 2 ईयर का 27,000 पड़ता है। बट आफ्टर 12 PM tonight if you take the subscription, then 1 year subscription alone after discount will cost you 27,225. मतलब it will be even more than 1 year 2 year subscription। अगर आप अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे 27,000 और 3 घंटे बाद अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी 27,000 से ज्यादा। सो बेटा आपको समझ में आ सकता है कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा क्या होगा। ठीक है, एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेटर विल बी 39,600। तो बेटा लगभग 40,000 के आसपास आपको देना पड़ेगा कंपेयर टू 27,000 आफ्टर 12 PM। सो इफ यू वांट टू टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, टेक इट राइट नाउ बिफोर दिस कॉस्ट इंक्रीजेस यूजिंग द कोड अप्रूव10। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों चाहिए, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। Look at these leader polls and leaderboard and live polls. Look at these features. Look at these interactive interface of Unacademy. आप इंटरफेस इसका देख सकते हैं कितना इंटरैक्टिव है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते साइमल्टेनियसली आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूं एंड यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द इमेज फॉर्म। देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, एंड यू हैव मल्टीपल बैचेस for different branches, for different exams. Okay, so beta, if you are taking 2-year subscription, then you can join GATE batch, you can join ESE batch, you can join the batches of different PSUs. ठीक है, so you can imagine how much you can do by taking 2-year subscription of Unacademy Plus। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके आप कितना ज्यादा अचीव कर सकते हो ये आपको क्लियर होगा। और अगर even if you are preparing for GATE 21, then taking 1 year subscription will be very beneficial for you. Why? Because you can attend the live batches, you can attend the batches of GATE, and after GATE there will be batches for ISRO, DRDO, Coal India, different PSU exams. So even if you are preparing for GATE 21, you can still take 1 year subscription and you can take a lot of advantage from this subscription plan. Okay, so beta take the subscription right now using the code APPROVE10। APPROVE10 code use करोगे, you will get instant 10% off। 1 year subscription will be only 22,500, 2 year will be only 27,000। And this is not just a code, this is a connection between you and me. This is a bridge between you and me on Unacademy। So if you take this code, then you will get my 100% attention and I will guide you throughout your journey। आपके पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा बेटा। और मेरा साथ आपको क्यों चाहिए? Why do you need my guidance? Why do you need my mentorship? Because I was also like you, I was also one of a student just like you। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था, एक जस्ट अबव एवरेज स्टूडेंट था। बहुत ज्यादा मेरे भी मार्क्स नहीं आते थे। I also started my preparation in my final year और मैंने अपनी पहली गेट की अटेम्प्ट में अपना गेट क्लियर किया था। आई गॉट AIR 320। I got an interview call from IOCL। IOCL was the only PSU that time which was recruiting by GATE। तो GATE से पहली बार IOCL ने लेना चालू किया था in 2010 and in 2010 I got an interview call from IOCL, but I never went to IOCL because I always wanted to go to IIT। So I chose IIT over IOCL। I went into IIT Kharagpur। I got into Mahindra Research Valley। I cracked Mahindra Research Valley interview। मैंने महिंद्रा रिसर्च वैली का इंटरव्यू क्रैक किया अपने फाइनल ईयर एमटेक में। आई वेंट इनटू महिंद्रा रिसर्च वैली एज अ डेप्यूटी मैनेजर। आई वाज वर्किंग देयर इन द फील्ड ऑफ डिजाइन। ठीक है, आई वाज डिजाइनिंग कार्स। माय जॉब वाज रियली गुड बट आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर टीचिंग। मेरे अंदर हमेशा टीचिंग करने का पैशन था, जुनून था, इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ के टीचिंग चालू की। एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग यू गाइस ऑल ओवर इंडिया। मैंने हर जगह पढ़ाया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग सिटीज में मैंने पढ़ाया हुआ है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आई हैव ट्यूटर्ड, आई हैव मेंटर्ड। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। और चूंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं, आई कैन रिलेट विथ यू बेटर। ठीक है, यू कैन रिलेट विथ मी बेटर।
आप मुझसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओगे. So if you want to be connected with me, if you want my guidance and my mentorship, then use this code APPROVE10 and take the Unacademy Plus subscription right now before 12 AM today. आज रात को 12 बजने से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लोएस्ट प्राइस पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. अदरवाइज आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ने वाला है. 22,500 से डायरेक्टली 27,000 एंड 27,000 से डायरेक्टली 39,600. So beta, instead of taking 1 year subscription later, take 2 year subscription right now and take the full advantage of all these multiple batches. One subscription and you can attend all these batches. Okay. So take the subscription right now using the code APPROVE10. Show your faith in me and I will show my faith in you. Thank you so much for joining me. I will see you soon on Unacademy Plus. Till then, bye bye. Take care. Good night.